Good morning, student. How are you? Myself, Hansa, of your science teacher. Today, we will start chemical reaction and equation of class 10th. Then we know the chemical reaction. We have seen and we have already know in chemical reaction there is no new atom is formed. No new atom is formed. New substance is formed. New atoms means, for example, Na plus Cl. This will be NaCl. It means यहाँ Na cannot form. PCl नहीं बनाएगा. It means chemical property will change. But atom sodium है, that will be the same sodium. These are the different reaction we know about. But there are different type of chemical reaction will takes place. First, combination reaction. Second, decomposition reaction. Third, displacement reaction. Fourth, double displacement reaction. Fifth, oxidation and reduction reaction. Oxidation reaction अलग होगा, reduction reaction अलग होगा, दोनों का combination redox reaction कहलाएगा. These are the different type of reaction take place. But in today's video, we will discuss only the combination reaction. कि combination reaction होता क्या है, कैसे होता है, we will discuss for this combination reaction. इसके अलावा दो रिएक्शन और होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, कैसे होते हैं, दैट विल बी covered in this topic. But in today's video we will discuss only the combination reaction. Combination means आपको नाम से पता लग रहा है. Listen carefully. Combination reaction. Combination. What is the meaning of combination? Combine, join. किसको कंबाइन या ज्वाइन करेंगे? टू एलिमेंट्स को, टू कंपाउंड को. व्हेन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड ज्वाइन टुगेदर, जुड़ेंगे, जुड़ने पर क्या बनेगा? जब एक नया सब्सटेंस बनेगा, सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, ये हमने क्या लिया, वेसल्स ले लिया. इसमें क्या लिया हमने? प्लीज बी केयरफुल. CaO. I think you know the name of CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड को हम जनरली क्या नाम बोलते हैं? इसे क्विक लाइम, जो सफेदी है, चूना जिसे है ना, चूने का सफेदी, उसमें हमने क्या डाला? वाटर डाला. क्या डाला? वाटर. व्हेन वी पोर वाटर, इसमें क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया. क्या डाल दिया? वाटर इसमें डाल दिया, तो रिएक्शन होगा इसमें. द रिएक्शन विल टेक प्लेस. जब रिएक्शन हुआ इसमें, तो व्हाट वी हैव सीन, हमने क्या देखा? क्या देखा हमने? कि फर्स्ट रिएक्शन वाज वेरी फास्ट, व्हिच रिएक्ट वेरी वेगोरसली. बड़ी तेजी से रिएक्शन होता है. वेरी फास्ट रिएक्शन, क्विक रिएक्शन, वेगोरसली इट विल टेक प्लेस. एंड सेकंड, ये देखा व्हेन आई टच द बीकर, जब वेसल्स, जब ये बीकर को हमने टच किया, तो the temperature was increased. टेम्परेचर क्या था? बढ़ गया था. टेम्परेचर was increased. It means increase in temperature. Increase in temperature. कब? जब हमने क्या करा? कंबाइन करा. कंबाइन किसको किया? CaO, क्विक लाइम में हमने क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड में हमने क्या मिलाया? पानी मिलाया. क्या मिलाया? पानी, वाटर मिलाया. द रिएक्शन टेक प्लेस वेरी फास्ट, वेगोरसली रिएक्शन विल टेक प्लेस. देन इट गिव्स अ सिंगल सब्सटेंस, जिसे हम क्या बोलेंगे? CaOH होल
twice. What we'll say? We will say that CaOH whole twice means calcium oxide, calcium hydroxide, sorry, calcium hydroxide, calcium hydroxide. This calcium hydroxide will form, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्लेक लाइम बोलेंगे. क्या बोलेंगे? स्लेक लाइम. स्लेक लाइम बोलेंगे, बुझा हुआ चूना. This slag lime is formed by combining of calcium oxide and water. Therefore, this reaction is called combination reaction. So it means combine करा किसको? When we combine A which is calcium oxide plus B which is water, that gives a new substance C. New substance C या A B single substance. A B is the single substance. This is known as combination reaction. So generally in simple form what we say that when two or more reactant या some substance combine together to form a single substance या single product is known as combination reaction. मीन्स जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे तो एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा, उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हेन टू और मोर या व्हेन टू सब्सटेंस, टू रिएक्टेंट, these are the reactant, these are the substance, it may be compound like this. जब दो सब्सटेंस या दो कंपाउंड को आपस में मिलाएंगे तो सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सब्सटेंस देगा, तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. A plus B that is AP is known as combination reaction. अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अदर एग्जांपल वी विल चेक इट. फर्स्ट C plus O2. C plus O2. C is the single O2. Carbon plus oxygen. Carbon plus oxygen, what it will give? Carbon dioxide. It means the element carbon and the element oxygen, when they combine together to form a single product, is known as carbon dioxide. Means in which the two reactant आपस में combine होंगे, they will give the single product. This is the first example and this is the second and the third. When H2 means hydrogen react या combined with oxygen, it give a single product, single substance is H2O. Means combination reaction. When hydrogen combined with oxygen, it give water. This is also the combination reaction. And in this reaction, like CaO plus में H2, that gives CaOH whole twice, calcium hydroxide. And also in this reaction, heat is released. As you know that when I touch this beaker, the vessels, the temperature increased. So it means mostly combination reaction में ज़्यादातर heat क्या होती है? Release होती है. Most of the combination reaction release energy या heat, and the reaction in which heat is released या evolved, जिस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है या रिलीज होती है, उन रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. तो इसमें मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो एक नया पॉइंट मिल गया आपको. एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोस रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड और इवॉल्व्ड इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड वी विल टेक सो मेनी एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. Most of the combination reaction are called exothermic. Exothermic reaction, the reaction in which
reaction in which heat evolved या release. First example of this one, CH4 plus में oxygen, CH4 plus oxygen, CH4 methane, oxygen. Methane is the hydrocarbon which is used in CNG, compressed natural gas, main constituent of CNG, which is methane. When burned, then it gives carbon dioxide gas plus water plus में heat. This will be burning of methane या burning of natural gas. Burning of methane. This is the example of exothermic reaction, means burning of natural gas. Burning of natural gas. Natural gas. This is called natural gas. CNG, natural gas. Main constituent of natural gas is methane. Burning of natural gas give carbon dioxide, water and heat. Heat is released. Therefore, this is called the exothermic reaction. And this equation is unbalanced and you have to balance yourself. This is 2 and this is 2. Now you know how you have to balance. And second equation is the respiration. You know respiration. What is the respiration? I think you know it very well. Respiration जो process है, that is completely opposite the process of photosynthesis. Photosynthesis का just opposite है. Photosynthesis में preparation of food will take place, but in respiration oxidation of food will take place. Means complex food will break down into simpler form and give us energy. खाना जो है वो oxidize होता है and that will give us energy. हमें क्या देगा वो? एनर्जी देगा. फॉर इक्वेशन इसकी रेस्पिरेशन की इक्वेशन, मीन ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन. ऑक्सीडाइज मीन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज द ग्लूकोज which is the simplest form of food which oxidize and give and produce water, carbon dioxide, water plus में heat. This reaction will be respiration reaction. And balance it. 6, 12. देखिए जरा 6, carbon 6 here is carbon 6 है, यहाँ भी 6 है. You know it, balance it. Hydrogen here is 12, here is 6 or 12, 18, here is 6. Now check it. Now you know the balance. I have already explained you the balance the equation. Now you go through the video how you have to balance. Means glucose when oxidized, that will give carbon dioxide, water and energy. These are the waste material which excrete out from our body, but mainly in which the energy is absorbed by our body. Mainly which part? The energy is the part which absorb. Means जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो क्या मिलती है? हमें मिलती है बॉडी, तो इसके बाद we can do work. खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है. कैसे मिलेगी? अब ये रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द exothermic reaction. It is called the exothermic reaction. Why it is called the exothermic reaction? Respiration process is called the exothermic reaction. Why? क्योंकि जो फूड है, the food which we intake, that food is in complex form. किस फॉर्म में? complex form में. और वो क्या होता है? break होता है. That will be breakdown. And breakdown in what form? ग्लूकोज की फॉर्म में breakdown होता है. और जो फूड होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट. और वो क्या होता है? ब्रेक होता है. क्या होता है? दैट विल ब्रेक किसमें? ग्लूकोज की फॉर्म में. द फूड विच वी इनटेक, दैट फूड कंटेन कार्बोहाइड्रेट एंड द कार्बोहाइड्रेट इज द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द फूड which break down into simpler form in form of glucose, and this glucose is mixed with किसके साथ? The glucose क्या होगा? automatically mixed with the किसके साथ? mixed with the oxygen.
मिक्स विद ऑक्सीजन, किसके साथ मिक्स हो जाएगा? ऑक्सीजन के साथ। और ऑक्सीजन जनरली किस में प्रेजेंट होगा? विद द ब्लड विच फ्लो इनसाइड आवर बॉडी, ब्लड सेल में, सेल इन आवर बॉडी, द ऑक्सीजन मिक्स विद द ब्लड सेल इन आवर बॉडी एंड गिव अस एनर्जी, विच जो हमें क्या प्रोवाइड करेगा बेटे? एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एंड इन दिस वे वी कैन गेट द एनर्जी, we can get the energy, therefore the respiration is called the exothermic reaction। से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि so many times बोर्ड पर पूछते हैं कि why the respiration is called the exothermic reaction, तो you have to write the equation also, it is better for you। respiration, please be listen carefully, respiration वो प्रोसेस है जो हमें क्या करता है बेटे? फूड ऑक्सीडाइज होने पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन दिस वे वी गेट द मीन carbohydrate break down into glucose and this glucose mix with the oxygen in the cell of the body and give us a release energy, therefore this is called the respiration reaction and the respiration process which is called the exothermic reaction। is it clear? And this is between most of the combinational reaction are called the exothermic reaction। एंड हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था बेटे, CaO प्लस में H2O that gives CaOH whole twice। sorry, this is the slack line, this slack line is used for white washing। किसके लिए होता है बेटे? हमने एक चूना लिया, चूने में पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद क्या मिली बेटे? सफेदी। इससे हमने क्या किया? व्हाइट वॉश किया। क्या किया? व्हाइट वॉश, सफेदी की। तो दिस CaOH2, please be careful, CaOH2 ने एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट किया। उस एटमॉस्फेयर के साथ में डिफरेंट गैस थी, उस एटमॉस्फेयर में क्या थी? डिफरेंट गैस थी। उन डिफरेंट गैस में उसके ने किसके साथ रिएक्ट किया? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ किया। इट रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस स्लैक लाइन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड which give CaCO3 व्हाइट, बिल्कुल सफेदी होगी, बिल्कुल व्हाइट सनसीट साइन, किसमें कलर में? व्हाइट कलर में। किस कलर में? कैल्शियम कार्बोनेट विच इज व्हाइट इन कलर, साइनी सरफेस, साइनी सरफेस, दिस साइनी सरफेस विच इज व्हाइट, बिल्कुल सफेद, ये मिलेगा हमारे को, which is white in color, insoluble white solution plus water that will goes to the atmosphere in form of vapor, in form of vapor। and today videos we have to cover, we had covered that is combination reaction, and the combination reaction briefing I am you, combination of two or more reactant when give a single product is known as combination reaction। फिर उसके बाद कल आपने मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है बेटे? इन विच द हीट इज रिलीज, और उसमें आपने डिफरेंट इक्वेशन पढ़ी। एंड दिस आर द टॉपिक, टुडेज टॉपिक इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एंड प्लीज बी केयरफुल। अब आपने ड्यूअल होमवर्क इज डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, and why respiration is called। Note down the question. First is define combination reaction, exothermic reaction, why respiration is called the exothermic reaction, and give different two or more equation of combination reaction and exothermic reaction, and why name the type of reaction, name the type of reaction on the decomposition of, name the type of the reaction on the decomposition of vegetable matter, decomposition of vegetative matter। and good day, be safe at home, thank you।